हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को फिर से स्वागत करता हूं मेरा ऐसा यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे दोस्तों सुनीता विलियम्स के बारे से, जो कि 2024 के 5 जून तारीख को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए हुए सुनीता विलियम्स के 4 सहयोगी के साथ गए हुए अंतर्राष्ट्रीय में क्रू 9 के द्वारा गए हुए थे 8 दिनों के लिए। और वहां पर उनके फांसे जाने के कारण वापसी आने का था 8 दिनों के बाद, लेकिन निर्धारित समय पर ना आने के कारण दोस्तों टेक्निकली इशू होने के कारण स्पेस पर वो रिटर्न नहीं आ पाए। तो इसलिए नासा ने दोस्तों क्या किया कि मतलब उनको लाने के लिए, वापस लाने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंसे हुए सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी को लाने के लिए नासा ने दोस्तों क्रू 10 को लॉन्च किया और उनको लाने के लिए और 4 लोगों को नासा से भेजा गया। और उनको लाने के लिए इस वीडियो के माध्यम से हम बातचीत करेंगे दोस्तों सुनीता विलियम्स के बारे से, जो कि मतलब इन विषयों में गए हुए थे। इस वीडियो के माध्यम से हम समझने के लिए कोशिश करेंगे और देखेंगे आगे वीडियो में। आप लोग वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। और इस वीडियो के माध्यम से हम क्रू 9 जो कि वापस ही पृथ्वी पर लाया गया दोस्तों, कैसे लाया गया और कैसे आना हुआ और कितने दिन, लगभग दोस्तों 9 महीना 24 दिन के बाद सुनीता विलियम्स फिर से हमारे दुनिया में यानी कि धरती पर लैंडिंग करने वाली है। इस विषय से आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। 9 महीना 24 दिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने के बाद क्रू 9 धरती पर लैंडिंग हो चुकी है दोस्तों। सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी पूरी टीम सही सलामत हमारे धरती पर आ चुके हैं। सारी दुनिया सुनीता विलियम्स के टीम को धन्यवाद दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। उसी बात इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे सुनीता विलियम्स के बारे से। आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। As you can see there on your screen, continuing to monitor progress of the Dragon spacecraft. And we're going to stand by for splashdown located in the Gulf of America off the coast of Tallahassee, Florida. And splashdown, Crew 9 back on Earth. Freedom, splashdown. Good main release. Copy, splashdown. We see main chutes cut. Nick, Alex, Butch, Sunny, on behalf of SpaceX, welcome home. It is an amazing, what a ride. I see a capsule full of friends ear to ear. See on your screen we have report back when recovery personnel are en route. Understand. We're in section 2, 4.800 landing response, and looking for your word on if it is necessary. In the distance, we can see the recovery vessel making its way. Copy, you're in section 2 for the environmental assessment in 4.800. That is not necessary today. Understand. Raise and advise. So we will continue to have communications between the Corps and Nick Hague, the commander of Crew Dragon Freedom, which just splashed down 2 minutes ago off the coast of Tallahassee, Florida. Dragon Freedom has returned home with NASA astronauts Nick Hague, Sunny Williams, Butch Wilmore, and Roscosmos cosmonaut Alexander Gorbanov. They're back on Earth after approximately 17 hours of a return journey from space. The SpaceX recovery ship and team have been waiting for Dragon's splashdown, and they will now make their way to the splashdown location. The teams have been ready and waiting about 3 nautical miles away, so it's going to take them about 30 minutes or so to make their way to SpaceX Freedom. Pretty sure we're in stable 1. Copy, stable 1. We see the same.
It's going to take about 30 minutes for the recovery team to make their way over to Nick, Sunny, Butch, and Alexander, who are still seated and secured inside that Dragon spacecraft there on your screen. Incredible views there of that thermal protection system, or TPS. That Dragon capsule was pristine white color before it departed the station, and we can see how the re-entry phase, the thermal protection system did its job. Now, if you're wondering what that hole, that like bucket area is, that is underneath the side hatch. That is where the main parachutes were stored. So when we saw the Dragon capsule docked at station, it looked very different. The panel that protects and covers the main parachutes, that was still intact, as well as the panels that enclose where the drogue parachutes are located. Indian origin astronaut Sunita Williams is finally set to return to Earth after an unexpected 9-month stay in space. She and fellow astronaut Butch Wilmore were originally on an 8-day mission to the International Space Station. However, technical problems with their Boeing Starliner spacecraft forced them to stay much longer than planned. Now, after months of delays, NASA and SpaceX have finalized their return plan. Crew 10 will launch on March 12, carrying their replacements to the ISS. Williams and Wilmore are expected to return around March 19 or 20 aboard a SpaceX capsule. But their real challenge begins once they land. Doctors say that upon landing they won't be able to walk. They will be placed on stretchers immediately for medical evaluations. In microgravity, the human body undergoes significant deterioration. NASA research shows that in just 5 days, astronauts lose up to 20% of their muscle mass. Over several months, bone density decreases by 1 to 1.5% per month. Even with 2 hours of daily exercise, astronauts still experience muscle atrophy and weakened bones. NASA follows a strict 45-day rehabilitation program. Phase 1 helps astronauts regain basic mobility and strength. Phase 2 focuses on coordination of cardiovascular training. Phase 3 works on restoring full body strength.
However, bone loss may be permanent. To regain strength, they will need osteogenic loading, training with weights 4 times their body weight. Beyond muscle and bone loss, astronauts also face heart issues, radiation exposure, and psychological effects. Radiation levels in space are extreme, increasing the risk of cancer and cardiovascular diseases. Sunita Williams' return marks the start of an intense recovery process, one that will help NASA prepare for future deep space missions, including Mars. And Dragon is now less than 7 meters away from the International Space Station as it continues to station. Again, we talked earlier that launch is all about accelerating the vehicles to orbital velocity and keeping continuing to orbit the Earth, handing over between our coverage. Dragon contact and soft capture complete. Pacific. The International Space Station and Dragon were flying 260 statute miles over the Atlantic Ocean. So we have all of those checkpoints along the way to docking. So we have those waypoints down. With Commander Ann McLean on your left and Pilot Nicole Ayers on your right, you can make that initial capture in the grand arrival when Crew 10 arrives at the space station. Actually used AI for some initial inspiration, and then a human artist perfected the design. So it's a 10-sided patch, and there you can see another view of Dragon. This is a camera on the International Space Station, so that it never gets old looking at views of spacecraft silhouetted against Earth. And if we space station, it's now inside waypoint 0, approaching waypoint 1, which is that 220-meter mark. Of the docking port, the International Docking Adapter. And as it closes its way in, has all the Dragon is transmitting docking camera video. Please confirm. Now again, the station continues here in the International Space Station flight control room. V2 power cycling allows him to have the view from Dragon itself as it moves up toward the docking axis, which you're seeing now. Now you see those displays, you'll see the trajectory curve out. The spacecraft itself calculated for proceeding inside the keypad sphere. You are seeing the docking light resume its final approach and finish its fly into the International Space Station's Node 2 forward docking port vestibule, which is the area between the Dragon hatch and the station hatch that was previously exposed to the vacuum of space. And then once that happens, they will conduct a series of leak checks. And there on your screen, you just saw NASA astronaut Sunita Williams actually floating right in front of that hatch that will be open in just a little bit. These views provided by an external camera on the exposed facility outside of the Japanese module. Hatch is closed. Ignition and lift off. Go SpaceX, go NASA Crew 10. Copy, what else? And liftoff of Crew 10 now soaring to the International Space Station. 1.7 million pounds of thrust now propelling Falcon 9 and Crew 10. And we're continuing to get good. অপেক্ষা মাথো সময়ৰ ঘৰৰ ছোৱালী ঘৰলৈ আহি আছে সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে সুনিতা আৰু আন মহাকাশচাৰীসকলৰ বাবে প্ৰায় 10 মাহ মহাকাশত কটোৱাৰ পিছত পৃথিৱীলৈ আহি আছে সুনিতা উইলিয়ামছ আৰু বাছ উইলমৰ সন্মুখত সুনিতাহঁতৰ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান কিয়নো প্ৰাক্তন মহাকাশ বিজ্ঞানী লেৰছ চিয়াওৱে জনাইছে যে মহাকাশৰ পৰা সুনিতাই যেতিয়া পৃথিৱীৰ মাটিত ভৰি দিব তেতিয়াই তেওঁলোকৰ ভৰিৰ খোজবোৰ হ'ব নতুনকৈ জন্ম হোৱা এটা শিশুৰ দৰে ভৰিৰ তলুৱাৰ দাঁত ছালখন আমাৰ দৰে হৈ থকা নাই সুনিতাহঁতৰ ভৰিৰ পতাৰ ছাল হৈ পৰিছে নৰম সেইবাবে পৃথিৱীলৈ আহি খোজ কঢ়াত যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব
মাত্ৰ 8 দিনৰ বাবে মহাকাশ অভিযানত গৈ প্ৰায় 10 মাহ মহাকাশতে আবদ্ধ হৈ পৰিছিল সুনিতা উইলিয়ামছ। শেষ মুহূৰ্তত যদি কোনো ধৰণৰ বাধা বিঘিনি আহি নপৰে তেন্তে 16 মাৰ্চৰ দিনটোত স্পেচ এক্সৰ মহাকাশযানেৰে পৃথিৱীলৈ উভতি আহিব 72 সংখ্যক অভিযানৰূপে পৰিচিত এই মহাকাশ অভিযানটোৰ কামাণ্ডাৰ সুনিতা উইলিয়ামছ আৰু অন্যান্য সহযোগী কেইজন। বয়িং ষ্টাৰলাইনাৰৰ সহযোগত নাছাই নতুন নতুন পৰিকল্পনা কৰিছে তেওঁলোকক পৃথিৱীলৈ অনাৰ বাবে। অৱশেষত অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিছে। সমগ্ৰ বিশ্ববাসীয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে সুনিতা উইলিয়ামছ আৰু তেওঁৰ সহযোগী কেইজন সুস্বাস্থ্যৰে সুকলমে বিনা বাধাই উভতি আহক পৃথিৱীলৈ। सो दोस्तों फाइनली नासा से भेजे गए क्रू 10 के मेंबर्स सभी लोग नासा के जितने भी एस्ट्रोनॉट वहां पर पहुंच चुके हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। और देखिए सुनीता विलियम्स के सभी दोस्तों से वे मिल रहे हैं कि मतलब 9 महीना दोस्तों 9 महीना फंसे जाने के बाद वापस धरती पर आने के लिए नासा ने दोस्तों 9 महीने के बाद फिर से लॉन्च किया क्रू 10 को और भेजा वहां 4 एस्ट्रोनॉट को जिन्हें सुनीता विलियम्स के पूरे फंसे हुए धरती पर वापस लाने के लिए। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिए दोस्तों कितना खुशी की बात है कि 9 महीने के बाद दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 9 महीने के बाद क्रू 10 के मेंबर नासा के एस्ट्रोनॉट सभी लोग वहां पर पहुंच चुके हैं और उन्हें वापस ही धरती पर फिर से लाएंगे। दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो आप लोगों को कैसे लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। अब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, हैप्पी रहिए और स्वस्थ रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और नए वीडियो के साथ।